अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंश्योरेंस में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि इस चैनल के इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया था, पहले मरहले में हम मुख्तलिफ पॉलिसीज़, एंडोर्समेंट और क्लॉजेस को इंग्लिश ज़बान में आप लोगों के लिए पढ़ेंगे। दूसरे मरहले में इन्हीं तमाम पॉलिसीज़, एंडोर्समेंट और क्लॉजेस का उर्दू तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। आप लोगों की सहूलत के लिए इन्हीं तमाम पॉलिसीज़, एंडोर्समेंट और क्लॉजेस का इंग्लिश और उर्दू वर्जन इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। आइए देखते हैं आज हमारा टॉपिक क्या है। Riot and strike endorsement. It is hereby agreed and declared that notwithstanding anything in the within written policy contained to the contrary, the insurance under this policy shall extend to cover riot and strike damage, which for the purpose of this endorsement shall mean, subject always to the special conditions hereinafter contained. इस तौसीक के मुतसादम तहरीरी पॉलिसी में कुछ भी हो जो यहाँ मौजूद है, ये उसकी जगह ले लेती है। इसके ज़रिए ये इत्तेफाक किया और करार दिया जाता है कि इस पॉलिसी के तहत किए गए बीमा में तौसीक करके बलवा और हड़ताल से होने वाले नुकसानात को शामिल किया जाएगा, जिसका मतलब इस तौसीक के मकसद हमेशा इसके बाद मौजूद खुसूसी शराइत के ताबे के तहत होगा कि Loss of or damage to the property insured directly caused by 1. The act of any person taking part together with others in any disturbance of the public peace, whether in connection with a strike or lockout or not being an occurrence mentioned in Condition 2 of the special conditions hereof. 2. The action of any lawfully constituted authority in suppressing or attempting to suppress any such disturbance or in minimizing the consequences of any such disturbance. बराह रास्त बीमाशुदा अमलाक को होने या पहुँचने वाला नुकसान बावजह 1. किसी भी शख्स का अमल जो दूसरों के साथ शामिल होकर अवामी अमन में खलल पैदा करने के लिए किया जाए, चाहे हड़ताल या तालाबंदी के सिलसिले में हो या ना हो, पर ऐसा वक़ुआ ना हो जिसका ज़िक्र खुसूसी शराइत की शर्त नंबर 2 में दर्ज है। 2. किसी भी कानूनी तौर पर तश्कील शुदा इदारे हुक्काम का वो अमल जो इस तरह के किसी भी खलल को दबाने या दबाने की कोशिश करने या इस तरह के किसी भी खलल के नताइज को कम करने की खातिर किया गया हो। 3. The willful act of any striker or locked out worker done in furtherance of a strike or in resistance to a lockout. 4. The action of any lawfully constituted authority in preventing or attempting to prevent any such act or in minimizing the consequences of any such act. 3. किसी भी हड़ताली या तालाबंदी करने वाले मजदूर की जानिब से दानिस्ता किया जाने वाला अमल जो हड़ताली मामलात में पेशकदमी या तालाबंदी के ख़िलाफ़ मज़ाहमत की सूरत में किया गया हो। 4. किसी भी कानूनी तौर पर तश्कील शुदा इदारे हुक्काम की जानिब से इस तरह के किसी भी अमल को रोकने या रोकने की कोशिश करने या ऐसे किसी भी अमल के नताइज को कम करने के लिए किए जाने वाले इक़दाम की सूरत में। Special conditions applicable to this extension. Condition 1. Subcondition 1. This insurance does not cover a. Loss of earnings, loss by delay, loss of market or other consequential or indirect loss or damage of any kind or description whatsoever. b. Loss or damage resulting from total or partial cessation of work or the retarding or interruption or cessation of any process or operation. इस तौसीफ़ पर लागू खुसूसी शराइत 1. ज़ेली शर्त 1. ये इंश्योरेंस तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं करती। ए. आमदनी के नुकसान को, ताख़ीर के सबब होने वाले नुकसान को, मुमकिना ख़रीदो फ़रोख्त के मौके का ज़ाया होना या दीगर नतीजतन या बिलवास्ता होने या पहुँचने वाला नुकसान, चाहे किसी भी किस्म या हैयत का जो भी हो। बी. काम के मुकम्मल या जुज़वी ख़ात्मे या किसी अमल या काम की कार्रवाई से पीछे हट जाने या इसमें रुकावट या इसके ख़ात्मे के नतीजे में होने या पहुँचने वाला नुकसान। c. Loss or damage occasioned by permanent or temporary dispossession resulting from confiscation, commandeering or requisition by any lawfully constituted authority. d.
loss or damage occasioned by permanent or temporary dispossession of any building resulting from the unlawful occupation by any person of such building. E. Loss or damage directly or indirectly caused by or arising from or in consequence of or contributed to by nuclear weapons material. C. किसी भी कानूनी तौर पर तश्कीलशुदा इदारे, हुक्काम के हुक्म या तलबी या ज़ब्ती के नतीजे में मुस्तकिल या आर्जी महरूमी की बदौलत होने या पहुँचने वाला नुकसान। डी. किसी शख्स के किसी इमारत पर गैर कानूनी कब्ज़े के नतीजे में ऐसी इमारत से आर्जी या मुस्तकिल महरूमी की बदौलत होने या पहुँचने वाला नुकसान। ई. जोहरी हथियारों के मवाद से पैदा होने वाले या इसके नतीजे में या इसके ज़रिए बराह रास्त या बिलवास्ता होने या पहुँचने वाला नुकसान। Provided nevertheless that the company is not relieved under C or D above of any liability to the insured in respect of physical damage to the property insured occurring before dispossession or during temporary dispossession. बशर्तिए कि इसके बावजूद कंपनी ऊपर दिए गए सी और डी के तहत बीमाशुदा अमलाक की महरूमी से पहले या आर्जी महरूमी के दौरान होने वाले किसी मादी नुकसान के हवाले से बीमादार की किसी जिम्मेदारी से बरी-उज़्ज़िम्मा नहीं होती। Condition 1 Subcondition 2. This insurance does not cover loss or damage directly or indirectly caused by or arising from or in consequence of or contributed to by ionizing radiations or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel. For the purpose of Condition 1 Subcondition 2 only, combustion shall include any self-sustaining process of nuclear fission. शर्त 1 ज़ेली शर्त 2। ये इंश्योरेंस किसी भी शदीद तापकारी जिसमें एटम या मालिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को हटाने की तवानाई मौजूद हो या जोहरी ईंधन की तापकारी से होने वाली आलूदगी या जोहरी ईंधन के जलने से बनने वाले जोहरी फुजला की वजह से या इससे पैदा होने वाले या इसके नतीजे में या इसके इश्तराक से बराह रास्त या बिलवास्ता होने या पहुँचने वाले नुकसान का अहाता नहीं करती। सिर्फ शर्त नंबर 1 ज़ेली शर्त 2 के मकसद के लिए जलने के अमल में जोहरी इंशिकाक किसी एटम के मरकज़े का 2 या 2 से ज़्यादा छोटे मरकज़ों में तकसीम होना का कोई भी खुद को बरकरार रखने वाला अमल शामिल होगा। Condition 2. This insurance does not cover any loss, damage, cost, or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from, happening through, arising out of, or in connection with any of the undermentioned occurrences regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence to the loss, damage, cost, or expense. A. War, invasion, act of foreign enemy, hostilities, or warlike operations, whether war be declared or not, civil war. शर्त 2। ये इंश्योरेंस मुंदरजा झेल वाक़यात में से किसी की वजह से, इसके नतीजे में, इसके सबब, इसके ज़रिए, इससे पैदा होने वाले या इसके सिलसिले में बराह रास्त या बिलवास्ता होने या पहुँचने वाले नुकसान, लागत या अखराजात का अहाता नहीं करती, कतई नज़र कोई और वजह या वाक़या जो तवातर से या किसी और तरतीब से होने या पहुँचने वाले नुकसान, लागत या अखराजात का सबब बने। ए. जंग, हमला, गैर मुल्की दुश्मन की कार्रवाई, दुश्मनी या जंगी कार्रवाइयाँ, चाहे जंग का ऐलान किया जाए या ना किया जाए, खाना जंगी। B. Mutiny, civil commotion assuming the proportions of or amounting to a popular rising, military rising, insurrection, rebellion, revolution, military or usurped power, martial law, or state of siege or any of the events or causes which determine the proclamation or maintenance of martial law or state of siege. B. हुक्काम के खिलाफ खुली बगावत, किसी बढ़ती हुई मकबूल वजह से या इसके मुतरादिफ शहरी हंगामा, बढ़ती हुई फ़ौजी मदाखलत, सिविल या सियासी अथॉरिटी या किसी कायमशुदा हुकूमत के खिलाफ ख़ास तौर पर पुरतशद्दुद बगावत करने का अमल, एक कायम हुकूमत या रहनुमा के खिलाफ मुसल्लह मज़ाहमत का अमल, एक नए निज़ाम के हक़ में हुकूमत या समाजी निज़ाम का ज़बरदस्ती तख्ता उलटना,
एक मुनज़्ज़म फ़ौजी ऑपरेशन ख्वाह गैर मुल्की हो या मुल्की जो कानूनी तौर पर हुकूमत को दिए गए इख्तियारात को छीन लेता है, मार्शल लॉ या मुहासरे की हालत या कोई ऐसे वाक़यात या वजूहात जो मार्शल लॉ या मुहासरे की हालत का ऐलान या बरकरारी का तयन करते हों। C. Any act of terrorism. For the purpose of this endorsement, an act of terrorism means an act, including but not limited to the use of force or violence or the threat thereof, or an act harmful to human life, tangible or intangible property or infrastructure, of any person or group of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with any organization or government, committed for political, religious, ideological, or similar purposes, including the intention to influence any government or to put the public, or any section of the public, in fear. सी दहशतगर्दी का कोई अमल। इस तौसीक के मकसद के लिए दहशतगर्दी के अमल का मतलब एक ऐसा अमल बशमूल लेकिन ताकत या तशद्दुद के इस्तेमाल या और इसके मुमकिन ख़तरे तक महदूद ना हो, या किसी भी शख्स या अफराद के गिरोह की जानिब से किए जाने वाला अमल जो इंसानी ज़िंदगी के लिए छुए जा सकने वाली या महसूस ना किए जा सकने वाली अमलाक या बुनियादी ढांचे के लिए नुकसानदेह हो, चाहे वो इनफरादी तौर पर या किसी तंजीम या हुकूमत की तरफ से, या इसके सिलसिले में किसी सियासी, मजहबी, नज़रियाती अज़म या इस तरह के किसी मकसद के तहत बशमूल किसी हुकूमत पर असरअंदाज होने का इरादा, या और अवाम या अवाम के किसी तबके को खौफ में मुब्तला करने के लिए किया गया हो। This condition also excludes loss, damage, cost, or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any action taken in controlling, preventing, suppressing, or in any way relating to any of the above stated occurrences. ये शर्त किसी भी नौइयत के बराह रास्त या बिलवास्ता होने या पहुँचने वाले नुकसान, लागत या अखराजात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने से खारिज करती है, जो कि मज़कूरा बाला वाक़यात की वजह से, इसके नतीजे में या इसे संभालने, रोकने, दबाने या किसी भी सूरत में की जाने वाली कार्रवाई के सिलसिले में हों। Any loss or damage happening during the existence of abnormal conditions, whether physical or otherwise, which are occasioned by or through or in consequence of directly or indirectly any of the said occurrences, shall be deemed to be loss or damage which is not covered by this insurance, except to the extent that the insured shall prove that such loss or damage happened independently of the existence of such abnormal conditions. गैर मामूली हालात की मौजूदगी के दौरान कोई होने या पहुँचने वाला नुकसान, चाहे मादी हो या किसी दूसरी सूरत में, जो कि बराह रास्त या बिलवास्ता मज़कूरा वाक़यात के सबब या इसके ज़रिए या इसके नतीजे में वक़ू पज़ीर हो, तो ये समझा जाएगा कि इस होने या पहुँचने वाले नुकसान को इस पॉलिसी के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, सिवाय इस हद तक के बीमादार को साबित करना होगा कि इस होने या पहुँचने वाले नुकसान का गैर मामूली हालात की मौजूदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं था। In any action, suit, or other proceedings where the company alleges that by reason of the provisions of this condition any loss or damage is not covered by this insurance, the burden of proving that such loss or damage is covered shall be upon the insured. किसी भी अमल, मुकदमे या कार्रवाई में जहां कंपनी का ये मानना हो कि इस शर्त की दफात की वजह से किसी भी होने या पहुंचने वाले नुकसान का अहाता इस इंश्योरेंस के तहत नहीं किया जाता, तो ये साबित करने का बोझ बीमादार पर होगा कि होने या पहुंचने वाले नुकसान को तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। Condition 3. Unless otherwise expressly stated in the policy, this insurance does not cover a. Goods held in trust or on commission, b. Bullion or unset precious stones, c. Any curiosity or work of art for an amount exceeding Pak rupees 10,000. शर्त 3, जब तक बसूरत दीगर पॉलिसी में वाज़ेह तौर पर बयान ना किया गया हो, ये इंश्योरेंस तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करती। ए. एतबार या कमीशन पर रखी गई अशिया, बी. सोने चांदी की सलाख, ब्लॉक या कीमती पत्थर जो कहीं जड़े हुए या नस्ब ना हों, सी. कोई नायाब या फ़नी शाहकार जिसकी मालियत पाकिस्तानी 10,000 रुपये से ज़्यादा हो, d.
manuscripts, plans, drawings or designs, patterns, models, or molds. E. Securities, obligations, or documents of any kind, stamps, coined or paper money, checks, books of account or other business books, computer systems records. F. Explosives. डी मखतूतात मुसन्निफ का हाथ से लिखा हुआ या टाइपशुदा मतन जो अभी तक शाया नहीं हुआ है। मंसूबे, तस्वीर या खाका, इब्तदाई खाका जिस पर अमल दरामद की जाने वाली किसी चीज़ की अहम खसूसियात ज़ाहिर होती हैं। मखसूस तरतीब से बनाया हुआ नमूना, तारुफ़ी या नुमाइशी नमूना, सांचे। ई. काबिल फ़हम, काबिल तबादला, मालियाती आला, दस्तावेज़ जो किसी किस्म की मालियाती कदर रखता है, वाजिबात के दस्तावेज़ या किसी भी किस्म के दस्तावेज़ात, डाक टिकट, सिक्के या कागज़ी रकम, चेक, अकाउंट की किताबें या दीगर कारोबारी किताबें, कंप्यूटर सिस्टम के रिकॉर्ड। एफ. धमाका खेज मवाद। Condition 4. This insurance may at any time be terminated by the company on notice to that effect being given to the insured, in which case company shall be liable to repay a rateable proportion of the premium for the unexpired term from the date of cancelment. If the insurance be terminated at the request of the insured, the company shall not be liable to repay the premium or any part of it except in so far as the insurance applies to stocks in respect of which the company shall retain a premium calculated according to its customary short period scale for the time and said insurance has been in force. शर्त 4. ये इंश्योरेंस किसी भी वक्त कंपनी की जानिब से बीमादार को नोटिस के ज़रिए दिए गए वक्त पर ख़त्म की जा सकती है। ऐसी सूरत में कंपनी मनसूखी की तारीख से इंश्योरेंस की गैर ख़त्मशुदा मुद्दत के लिए काबिल शरअ तनासुब के मुताबिक प्रीमियम वापस अदा करने की ज़िम्मेदार होगी। अगर बीमादार की दरख्वास्त पर इंश्योरेंस ख़त्म कर दी जाती है तो कंपनी प्रीमियम या इसके किसी भी हिस्से की वापस अदायगी की ज़िम्मेदार नहीं होगी, सिवाय इसके कि जहाँ तक इंश्योरेंस का इतलाक़ इन स्टॉक्स पर होता है जिसके सिलसिले में कंपनी इस वक्त के लिए अपने रवायती मुख्तसर मुद्दती पैमाने के मुताबिक हिसाबशुदा प्रीमियम रखेगी और कहे कि इंश्योरेंस नाफिजुल अमल है। Condition 5. If the property hereby insured shall at the breaking out of any fire or at the commencement of any destruction of or damage to such property by any other peril insured against by this endorsement be collectively of greater value than the sum insured thereon, the insured shall be considered as being his own insurer for the difference and shall bear a rateable share of the amount of the loss accordingly. Every item, if more than one, of the policy shall be separately subject to this condition. शर्त 5. अगर इसके ज़रिए बीमाशुदा अमलाक को किसी लगने वाली आग के सबब या इस तौसीक के तहत फराहम किए गए तहफ़्फ़ुज़ में से किसी दूसरे ख़तरे के सबब ऐसी अमलाक को होने वाले नुकसान या तबाही की इज्तिमाई मालियत ज़र बीमा से ज़्यादा हुई तो बीमादार को इस फ़र्क के लिए ख़ुद अपना बीमा कुरिंदा समझा जाएगा और इसके मुताबिक होने वाले नुकसान में इसी निस्बत से नुकसान का हिस्सा बर्दाश्त करना होगा। अगर एक से ज़्यादा आइटम हों तो पॉलिसी का हर आइटम अलग से इस शर्त के ताबे होगा। Provided that it is hereby further expressly agreed and declared that 1. All the conditions of this policy shall apply in all respects to the insurance granted by this extension save in so far as the same are expressly varied by above special conditions, and any reference of fire in the conditions of the policy shall be deemed to include the perils hereby insured against. 2. The special conditions herein shall apply only to the insurance granted by this extension, and the conditions of the policy shall apply in all respects to insurance granted by the policy as if this endorsement had not been made thereon. बशर्ते कि इससे मज़ीद वाज़ेह तौर पर इत्तफ़ाक़ किया और करार दिया जाता है कि 1. इस पॉलिसी की तमाम शराइत इस तौसी के ज़रिए दी गई इंश्योरेंस पर हर लिहाज से लागू होंगी जहाँ तक कि ये मज़कूरा बाला खुसूसी शराइत से वाज़ेह तौर पर मुख्तलिफ हैं, और पॉलिसी की शराइत में आग के किसी भी हवाला में इन ख़तरात को यहाँ किए गए बीमे के सबब शामिल समझा जाएगा। 2.
यहाँ की खुसूसी शराइत का इतलाक़ सिर्फ़ इस तौसीक़ के ज़रिए दी गई इंश्योरेंस पर होगा और पॉलिसी की शराइत का इतलाक़ पॉलिसी के ज़रिए दी गई इंश्योरेंस पर हर लिहाज से होगा, जैसे इस पर यह तौसीक़ नहीं की गई हो। जी नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे गुजारिश है, हमें अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा।